हे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए टेक सॉल्यूशंस को और क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हे गाइस, वेलकम टू टेक सॉल्यूशंस। तो मैं आज Redmi Note 5 Pro के साथ J7 Max का कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। The Samsung Galaxy J7 Max has a 13 megapixel camera with f1.7 aperture along with the single LED flash. There is also a smart glow light around the camera that was first introduced with the Galaxy J2 2016 model. On the front, there is a 13 megapixel front facing camera with 1.9 aperture and it has also a LED flash. And the mighty Redmi Note 5 Pro, there is a combination of 12 megapixel sensor with f2.2 aperture and a 5 megapixel sensor with f2.0 aperture, and it has 1.25 micron pixel size. On the front, there is a massive 20 megapixel front facing camera with f2.0 aperture. तो पहले देखते हैं daylight pictures. As you can see that Redmi Note 5 Pro में J7 Max से ज्यादा नेचुरल फोटोज आ रहा है और ओवरऑल देखा जाए तो Redmi Note 5 Pro में डिटेल्स ज्यादा आ रहा है। एंड लो लाइट को देखा जाए तो दोनों ही फोन्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में मैं Redmi Note 5 Pro को ही सजेस्ट करूंगा। एंड Redmi Note 5 Pro में आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाएगा जिससे आप DSLR की तरह अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 14K प्राइस ब्रैकेट में Redmi Note 5 Pro का कैमरा सबसे अच्छा है। तो आज का विनर है Redmi Note 5 Pro। सो गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो अपलोड करने के लिए। सो गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और उस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।